welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन सी स्वीट डिमांड की है अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा से? अब किस न्यू यंग एक्ट्रेस के साथ काम करने जा रहे हैं अक्षय कुमार? Recent development में क्या खुलासा किया लॉरेंस बिश्नोई ने इन सलमान खान डेथ थ्रेट लेटर केस? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभिनय मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभिनय मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं. सलमान खान आ चुके हैं और यह अब तक जिस तरह की धमकियां मिली है, देखिए सलमान खान देख सकते हैं किस तरीके से अपने घर तक पहुंचे हैं. सलमान खान और उनके डैड को मिली धमकी में अपने इन्वॉल्वमेंट से लॉरेंस बिश्नोई ने किया इनकार. दिल्ली पुलिस ने किए लॉरेंस बिश्नोई से सवाल. सलमान खान और सलीम खान को डेथ थ्रेट देने से लॉरेंस बिश्नोई ने किया इनकार. सलमान खान और उनके डैड सलीम खान को डेथ थ्रेट लेटर मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ऐसे में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में सामने आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ चल रही है. हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस मामले में खुद के इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया है. रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से सवाल जवाब किए. दिल्ली पुलिस questioned jailer gangster Lawrence Bishnoi in connection with the threat letter to actor Salman Khan. He said that he has no hand in this matter and does not know who issued that letter. आपको बता दें कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए सवाल जवाब किए जा रहे हैं क्योंकि 2018 में उन्होंने सलमान खान को धमकी दी थी. During the shooting of Race 3, he had said that he will murder Salman in Jodhpur. Reportedly, during his questioning, Lawrence Bishnoi said he had told his alleged associate Sampat Nehra to carry out the killing of the superstar some years back. जिसके लिए वो मुंबई भी आया था और उसने गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास के एरिया की रेकी भी की थी. But it seems he had a pistol with him and the superstar was out of range with that weapon. जिसके बाद they ordered an RK Spring rifle for the murder. It is a Finnish assault rifle और इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने 3 से 4 लाख रुपए भी खर्च किए थे. And it was to be delivered to Dinesh Fauji, who was a friend of Sampat Nehra. But the cops caught him by the time the rifle got to him. इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक statements of actor Salman Khan and his father Salim Khan have been recorded by Mumbai police after the actor received a threat letter yesterday, June 5th. According to the police, the statements of 4 people have been recorded so far. सलमान खान और उनके डैड की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है. करण जौहर की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर के लिए अक्षय कुमार के साथ क्या अनन्या पांडे को किया गया रोप? अक्षय कुमार ने अपने से कम एज की एक्ट्रेस को किया है रोमांस. नेटिजन्स के निशाने पर खिलाड़ी कुमार. क्या अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म में अनन्या पांडे आएंगी नजर? करण जौहर क्या अक्षय कुमार और अनन्या पांडे को एक साथ एक फिल्म के लिए करने जा रहे हैं कास्ट? रिसेंटली ही करण जौहर ने सी शंकरन नायर की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है. हालांकि फिल्म के कास्ट से जुड़ा किसी भी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन करण जौहर या उनकी टीम की तरफ से नहीं आया है. लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म में जहां अक्षय कुमार विल बी प्लेइंग द टिट्यूलर रोल, वहीं latest reports suggest that Ananya Panday will be playing the female lead in the film. करण जौहर जो करंटली जुग जुग जियो के प्रमोशंस में बिजी हैं, उन्होंने सी शंकरन की अपकमिंग बायोपिक पर ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है, जिसका टाइटल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर है. इस अपकमिंग फिल्म को डेब्यूटेंट डायरेक्टर करण सिंह त्यागी डायरेक्ट करेंगे. Reportedly, this film will be based on Raghu and Pushpa Palat's book, The Case That Shook the Empire. And it will revolve around the lawyer's battle against the British Raj to uncover Punjab Lieutenant Governor Michael O'Dwyer's role in the massacre. और अगर रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो फिल्म में अक्की लेट लॉयर एक्टिविस्ट के कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं.
A source close to the film reported that Ananya Panday will play the role of a feisty junior lawyer. However, she has yet to sign the dotted line. ऐसे में अगर अब अक्षय कुमार और अनन्या पांडे इस फिल्म के लिए वाकई साथ आते हैं तो अक्की स्क्रीन पर एक बार फिर अपनी एज से बहुत कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ नजर आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच एज गैप काफी ज्यादा है। अक्षय कुमार जहां 54 इयर्स के हैं, वहीं अनन्या पांडे सिर्फ 23 इयर्स की हैं। वैसे रिसेंटली रिलीज फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में भी अक्षय कुमार मानुषी शिल्लर को रोमांस करते नजर आए हैं, जो उनसे एज में लगभग 29 इयर्स छोटी हैं। यही नहीं, अक्की ने 30 सालों के अपने करियर में अक्सर अपने से छोटी एज की एक्ट्रेस के साथ ही स्क्रीन पर रोमांस किया है, फिर चाहे वो कटरीना कैफ हो या अनुष्का शर्मा या फिर कियारा आडवाणी। और फैंस को भी इन एक्ट्रेसेस के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी बेहद पसंद आई है। यशराज फिल्म्स की सम्राट पृथ्वीराज में भी अक्षय कुमार और मानुषी शिल्लर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को पसंद किया जा रहा है। हालांकि जून 3 को रिलीज हुई इस फिल्म में एक गलती की वजह से अक्षय कुमार को इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले अक्षय कुमार shared a photo from the film which shows the actor tied along with Sonu Sood. However, internet found out a goof up and trolls started targeting him with comments like, "This happens when you try to complete a movie in few days." चाय पीने के लिए रस्सी दिख रही है थोड़ी। एंड अक्षय कुमार, भाई कम से कम हाथों को बांध तो लेते। फिलहाल हमें तो अब करण जौहर की फिल्म में अक्षय कुमार और अनन्या पांडे के नाम पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार रहेगा। अर्जुन कपूर खाना चाहते हैं मलाइका अरोरा के हाथों की बनी सॉस। अर्जुन कपूर ने की मलाइका अरोरा से एक डिमांड। रणवीर सिंह ने कहा, बाबा यू आर द बिस्कुट टू माई न्यूटेला। अर्जुन कपूर एक बार फिर से मलाइका अरोरा को लेकर अपने फैंस के बीच बन गए हैं एक हॉट टॉपिक। अर्जुन कपूर ने अपने फैंस के जरिए की मलाइका अरोरा से एक क्यूट सी डिमांड। रिसेंटली अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपनी एक पिक पोस्ट की, जिसमें वो मोमोज खाते देखे जा सकते हैं। इसके साथ उन्होंने फैंस के साथ Q&A सेशन किया और उनसे पूछा, व्हाट्स द स्पाइसीएस्ट सॉस यू गाइज रेकमेंड फॉर माई नेक्स्ट बाउट ऑफ, फॉलोड बाय अ मोमो इमोजी। अर्जुन कपूर के इस क्वेश्चन पर वन ऑफ हिज फैंस रिस्पॉन्डेड सेइंग, सॉस मेड बाय मलाइका मैम। ऐसे में अर्जुन कपूर ने अपने फैन को रिप्लाई करते हुए लिखा, प्लीज आस्क हर टू मेक फॉर मी व्हेन आई गेट होम। शी इज बिजी एंजॉयिंग, ट्रैवलिंग एंड टेकिंग इंस्टा वर्दी पिक्स, बट मे बी दिस विल कन्विंस हर। साफ है अर्जुन कपूर भी मलाइका अरोरा के हाथों की बनी सॉस खाना चाहते हैं, लेकिन उनसे कहें तो कहें कैसे। आफ्टर ऑल मलाइका अरोरा इन दिनों टर्की में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। रिसेंटली मलाइका अरोरा ने अपनी टर्किश ट्रिप की कुछ सुपर हॉट पिक्चर्स भी शेयर की थीं, जिसमें वो ब्लू मोनोकिनी में थीं। इसे कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा था, संडेज टर्किश स्टाइल, #टर्किश डिलाइट। ऐसे में जाहिर सी बात है अर्जुन कपूर अपनी लेडी लव को बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे Q&A राउंड में अर्जुन कपूर के एक फैन ने उन्हें सजेस्ट किया कि he should try the sauce endorsed by his friend रणवीर सिंह। Replying to this, Arjun Kapoor said, "Arey, I agree for you, he's hot and spicy, but for me, he's a sweet dish." At रणवीर सिंह। ऐसे में रणवीर सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अर्जुन कपूर के इस पोस्ट को अपनी IG स्टोरीज पर रीपोस्ट करते हुए कहा, बाबा यू आर द बिस्कुट टू माई नटेला। इससे एक बार फिर से दोनों के बीच गहरी दोस्ती सामने आ गई है। मूविंग ऑन टू अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा, दोनों ने 2019 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म किया था और जहां तक खबरें हैं, दोनों इस साल नवंबर और दिसंबर में विंटर वेडिंग प्लान कर रहे हैं। एक क्लोज सोर्स ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को बताया, Arjun and Malaika are madly and deeply in love with each other. Their love is something that made us believe in true love all over again. And now they have decided to take one step ahead in their relationship by getting married. The couple will most do a winter wedding in Mumbai. Malaika and Arjun both love winter weather, and so they have decided to finalize the date in November or December and do an intimate wedding among friends and family.
अब ये तो विंटर्स आने के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन करंटली वी विश मलाइका अरोरा के हाथों की बनी सॉस खाने की अर्जुन कपूर की विश जल्द ही मलाइका अरोरा पूरी कर दे। Happy birthday in advance. Happy birthday to you. Happy birthday dear Teja. Happy birthday to you. तेजस्वी प्रकाश जो कि जल्द ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं ऑन 10th जून, लगता है उनके फैंस ने उनके लिए नागिन 6 के सेट्स पर उनके प्री बर्थडे प्लान्स रेडी किए हैं। वहीं तेजस्वी प्रकाश के फैंस ने तेजस्वी प्रकाश को भेजे कुछ फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स। रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ के 70 इयर्स एज अ क्वीन कंप्लीट करने के मौके पर प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन हुआ, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यंग प्रिंस लुइस पुट हिज हैंड ऑन हिज मदर्स माउथ। इस पर रिएक्ट करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान, who herself is a mother of 2 sons, Taimur and Jeh, took to Instagram and wrote, "Why do I know this feeling?" वरुण धवन और जानवी कपूर पेरिस में करेंगे बवाल के नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग, और इसकी एक ग्लिम्स वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी, जिसमें वो जानवी कपूर के साथ एक पिक में नजर आ रहे हैं। Well, in the pic, जानवी कपूर was seen wearing a beige-colored outfit with white sneakers and a grey stole. On the other hand, Varun Dhawan was seen standing on a pole in the background and looked excited to be in Paris. रिसेंटली शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बैन सब्सटेंस केस में क्लीन चिट मिली थी, और अब इस पर एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा that he didn't receive thanks from the superstar। बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने शाहरुख खान और उनकी फैमिली को इस टफ टाइम के दौरान पूरा सपोर्ट दिया था। Coming up on the show, मेजर फेम एक्टर अदीवी शेष ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudvani and welcome to Speak Easy. My guest today is very talented. He's been a part of the Telugu industry for a while and he's been doing films from all over now. Most interestingly, he's been a writer, he's been a director, he's been writing screenplays, and of course he's an actor. And today, his film has been the most talked about film in recent times. I'm talking about the major Unni Krishnan actor Adivi Sesh. Hello. Hi Rudrani. I thought it was important to mention the amount of research and roles and training that you've done. It's so important as an actor, isn't it? Thank you. I guess it's all from a place of love, so I'm happy. यहाँ पे जब मैं बहुत जन की कहानी सुनती तो कहते मैं हीरो बनने आया था। Some people से मैं एक्टर बनने आया था। यार सच बोलूँ तो मैं भी हीरो ही बनने आया, बट फ़र्क ये है कि किस किस्म के हीरो, मतलब हीरो जब लोग बोलते हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप में फिट करता है ना, तो शायद मैं अपने आप को किसी स्टीरियोटाइप में नहीं देख रहा था। मैं किसी भी चीज़ के साथ खुश था। बट इफ़ यू वांट मी टू प्ले अ कॉलेज किड, आई एम रेडी। इफ़ यू वांट मी टू प्ले a guy who's sitting in a jail, I'm ready. So there was no limitation on what the hero meant. I just wanted to carry a film. Yeah. So that makes sense, because when you carry a film, there's a certain credibility that comes. It gives me such interesting answers. Was there a breaking point where you thought like, I don't know if I'd be able to make it? And like, were there days like that? And how did you sort of deal with it? Right before Baahubali, I'd had a couple of supporting roles, really get made fun of. और यार कमाई भी इतनी नहीं थी उस टाइम, of course. एंड मैं तो अपने माँ पापा से आई डिडंट वांट टू कॉल अमेरिका एंड से लिसन, आई लेफ्ट अगेंस्ट योर विशेस, आई मूव्ड टू इंडिया, मूव्ड समवेयर एल्स, एंड आई एम नॉट अर्निंग, प्लीज हेल्प। मुझे वो पूछना नहीं था। No, it's a huge deal. Yeah, so it's like ego बीच में आ रहा था, you know, so I was just struggling managing. उस time it was a really low point, and then I think Baahubali happened because it's also produced by the same people who produced Punjab, Of course. and they loved me in Punjab. And Rajmouli sir loved me in Punjab. So next thing I know, Baahubali happened, and then I knew कि ठीक है, okay, there's people who are extremely big, who believe in me, who think I'm worth something. They've worked with me for 50-60 days, and I got a lot to learn. And Rajmouli sir doesn't know this, but he sort of became a guru on set. You know, I was watching him like a hawk, and I learned so much. I learned about his work ethic and how he conceives things. He once went after a shot for about 12 hours. Just kept going, doing take after take, getting that one shot right. And in the film, it's only there for about 3-4 seconds. So after I saw that, I knew that I needed to do something, because I'd just seen a man go after his creative instinct. तो मैंने फैसला कर लिया कि यार बहुत ही कम बजट में कुछ करना है। So I'd met PV Garu, this sort of hotshot producer in Telugu, and I said, listen, you know,
this is what I have. He said, I only do big films, Sesh, I don't do. We just happen to be workout buddies. Correct. So I only do big films. I said, तो ठीक है सर, समझ लीजिए कि एक गाने में एक सेट का ऐसे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया. That sort of was a nice selling point, you know. So he said, yeah, maybe you're right, it's just this, and if, what's the worst I can lose? But I'll still get good repute if the film works. And the film, I'm proud to say, sort of changed the game for serious film in Telugu. Today, if thrillers exist in Telugu cinema, I think I'd like to take a certain amount of credit for it. You should. And like, you know, it's suddenly within, like, you know, 1 year ago, you're like struggling to find a producer. A year later, you've got everyone from Sajid Nadyadwala sir to Taran Adarsh to Tapsi to everyone calling you saying, what is this? This is amazing. This is brilliant. Wow, wow, wow. When are we working together? And this and that. So life changed. I love the fact that you said that you saw that women finally were allowed to enroll in NDA, and you wrote that. And also because I find the army, when I've interacted with the army, and I've interacted with so many officers, I find that they're a lot less sexist than outside. Made out to be. No, than outside, than normal people like you and me. I find that the army has a lot more respect for the services of both genders, because so we did something historic with Major, right? We did this 10-city tour where we, 10 days before the release of the film, we put it up on Book My Show and said, buy tickets and you can watch it in your city. Correct. So we went to the Pune screening. This para special forces commander had come in a wheelchair and he was shaking, you know, saying, "Rokte khade ho gaye." I'm just crying, and he's saying, you did it with Major Sandeep. And while he said it, he said, and this is my wife, Lieutenant Colonel. And then he told me her name. How lovely. And I just thought that was so cool. And she was just standing there in a salwar kameez on unassuming, but I'm like, this woman's a Lieutenant Colonel, yo. That's how it is. And that was really cool. And the biggest highlight came when we showed it to the National Security Guard in Mumbai. And you have to understand, the NSG base in Mumbai was created because of 26/11. मतलब 26/11 की वजह से create किया. और वो जो सामने वाला गेट है ना, उस कैंपस का, उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार. Center of the campus में Major Sandeep Unnikrishnan का एक statue है. So these are people who really revere. Yeah, it was important for you, right? Yeah. To know what they thought of it. Right, and when we showed it to them, one of the first comments we got was a woman who was an army wife who got up and said, "I'm so happy you showed how we feel when some of our husbands go off to fight, because we're always shown in army films like कि हम सिर्फ supportive हैं और इंतजार कर रहे हैं. इंतजार कर रहे हैं. Whereas we can feel frustrated, we can feel victorious, we have our own hardships to deal with, our own struggles, and many of them are heroes in how they have to deal with life sometimes because the husband's not there for 6 months or 8 months." This lady stands up in the screening and says this, and everyone still pitch silent. बाकी सारे उससे पहले जब 4-5 screenings हुए थे तब तक सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, celebrate कर रहे थे, पर यहाँ सब चुप थे. मुझे समझ में नहीं आता, did the NSG not like it? Correct. So then somebody came to me, he was a major, and he said, "We need you at the headquarters, the group commander is waiting." Now keep in mind, ये screening 11:30 को खत्म हुआ. जी. मैं सोच रहा हूँ रात के 11 बजे ये अपने कॉन्वॉय में मुझे लेके जाना चाहता है. मैं सोच रहा हूँ क्या होने वाला है. And they took me there, and as soon as we went there, the group commander and a lot of army wives were sitting there, and they all had red eyes, and they were just sitting there saying, "We loved how you did it. We loved how you show what women go through." And I thought that was so beautiful. But then it didn't just stop there. Prasad, show me that medal. Yeah. This is a medal from the National Security Guard Black Cat Commandos. Oh Mumbai, my God. From the 26 Special Composite Group, the 26 SCG. Can I touch it? Yeah, it's extremely heavy too. Ooh, this is so cool. This is the real deal, people. Oh my God. और ये बहुत उनके लिए important होता है. Do you feel? It must have been a huge moment for you. It was right before the day I went to Vizag. Did you get emotional? Yeah, it was right before the day we went to Vizag for a pre-release event, and I remember standing in Vizag and showing it off on stage to all these fans, and I said, "This is bigger than an Oscar for me." Yeah. And I'm not just saying that when I say it, because these are people who have the exact same job as Major Sandeep Unnikrishnan. Yeah. Matlab exact, and no, but one of them was saying, "I am a training officer. My name is Major so I can't give his name." No, sure. And I was like, he said when he was watching, his entire family is looking at him like this.
while that discussion is happening in the film. And these people like that gave me this medal. तो मैं सोचने लगा यार एक तरह से जो आर्मी वाइव्स हैं उन्होंने ये मुझे दिखाया, एक तरह से मुझे पुणे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मिलने का मौका मिला जो खुद के हस्बैंड को इतने सपोर्ट कर रही थी बट is in her own right extremely remarkable. And then I have these men who live this life of Mere Sandeep give me this. दिखता है वो मेहनत, you know, even the action sequences are so well executed. Yeah. And congratulations for that. Thank you. Shays, this was such a wonderful chat for my side. I hope you had fun as well. Yeah, it's been good. I'm receiving the best reviews of my career. Congratulations once again. Thank you. Shays, this was lovely chatting with you, and I hope you had fun. Yeah, I appreciate it. Thank you once again.